topic of our today's lecture is bearings. ठीक है. With respect to the conversation with the class, that you people don't have any background of the bearings, mechanics and machines में आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ. So I will be starting this lecture from the ज़ीरो लेवल कि बेरिंग्स क्या होते हैं, किस तरह से चलते हैं और इनका क्या एटमोलॉजी होती है, क्या इनकी साइंस क्या है बेसिकली. ठीक है, तो उसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गो डीप इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एनालिटिकल मॉडलिंग एंड द मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ द bearings and its different types, let's have a short introduction what the bearing is. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द डेफिनेशन, बेरिंग्स क्या होते हैं और वो किस तरह से यूज़ होते हैं और वो क्या क्यों होते हैं. उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि ये जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन एलिमेंट्स होते हैं, लाइक देयर आर शाफ्ट्स ओवर देयर, इंजन्स होते हैं हमारे पास और मोटर्स होती हैं, वो सारी की सारी हमें आउटपुट दे रही होती हैं शाफ्ट्स के साथ. जब शाफ्ट चलती है तो शाफ्ट्स को चलाने में, शाफ्ट एक रोटरी इक्विपमेंट है और रोटरी इक्विपमेंट के लिए हमें जो फ्रिक्शंस होती हैं बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल्डिंग, जिसने उस शाफ्ट को हैंग किया होता है या उसने उसको होल्ड किया होता है, उसके लिए ये डिफरेंट होती है. ठीक है. सो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो आपकी शाफ्ट के दरमियान और उस सपोर्टिंग जो फ्रेम होगा या सपोर्टिंग हाउसिंग होगी, उसके लिए उसके दरमियान हम एक स्मॉल डिवाइस लगा देते हैं जिसको हम बेरिंग कहते हैं. ठीक है. बेरिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. कुछ बॉल बेरिंग्स होते हैं, जिस तरह अभी आपको जो ये एनिमेशन चल रही है ऑन द राइट, इस पे जो ये वाली टाइप है, इसको हम बॉल बेरिंग कहते हैं. ठीक है. और इस टाइप के अंदर जो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास पॉइंट फोर्सेस होती हैं. ठीक है. बेरिंग्स जो हैं वो सिर्फ बॉल्स पे ही नहीं चल रहे होते, बॉल्स ही लोड टेकिंग एलिमेंट्स नहीं होती, उसके अंदर हम रोलर्स भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप डिटेल देखेंगे इसको, तो दिस मिडल इक्विपमेंट इज़ द शाफ्ट. उसके बाद ये वाला रिंग है, इसको हम इनर रिंग कहते हैं. और ये बॉल्स चल रही हैं, ये बॉल्स सेपरेटर के थ्रू या रिटेनर के थ्रू ये इक्वल डिस्टेंस पे चल रही होती हैं, ये ताकि आपस में टकराएंगे. ठीक है. और उसके बाद ये हमारा आउटर रिंग होता है, और मोस्ट केसेस ये आउटर रिंग जो होता है ये स्टेशनरी होता है, और ये जो इनर रिंग होता है ये हमारा रेवोल्यूशंस पे होता है. ठीक है जी. ये तो हो गई सिंपल सी कि ये काम कैसे कर रहा है या ये चल कैसे रहा है. ठीक है. अब जो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, हमें जो नॉलेज बेरिंग को समझने के लिए चाहिए होगा वो 4 फील्ड्स पे डिवाइड हुआ है. ठीक है. सबसे जो मेन फील्ड होगा जिसके अंदर हमें जिसका नॉलेज हमें प्रायर होना चाहिए बिफोर वी विल गो डीप इनटू द बेरिंग्स, वो हमारी मैकेनिक्स है. ठीक है. मैकेनिक्स को अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स फिर आपकी दो हिस्सों में और डिवाइड हो जाती है. एक को हम स्टैटिक्स कहते हैं और एक को हम डायनामिक्स कह देते हैं. ठीक है. तो स्टैटिक केस इसलिए होगा कि जब ये आपकी शाफ्ट जब वर्किंग में नहीं होगी, डायनामिकली चल नहीं रही होगी, किसी मोटर से भी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये शाफ्ट जब रुकी होगी, डाउन टाइम्स होते हैं, हर वक्त 24 आवर्स तो मशीनरी चल भी नहीं रही होती, उसके ऊपर शाफ्ट का एक लोड होगा इस बेरिंग के ऊपर, जो कि बेरिंग ने ही सस्टेन किया होगा, और बेरिंग ने सस्टेन करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर देता है वो ग्राउंड पे. सो हमें ये देखना है कि स्टैटिकली जब शाफ्ट पड़ी होती है तो वो बेरिंग पे कितना अफेक्ट कर रही होगी. ठीक है. एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि जो बॉल्स चल रही हैं बीच में, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट्स पे हैं दोनों रिंग्स के साथ. ठीक है. सो देयर क्वालिटी एंड देयर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हमें प्रायर नॉलेज चाहिए मैकेनिक्स का इसके अंदर, जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है. स्टैटिक्स का यहाँ पे अगर ये शाफ्ट नहीं चल रही, लेकिन जब ये वर्किंग में आएगी तो ये थाउजेंड्स ऑफ आरपीएम्स में जब ये रिवॉल्व करना शुरू करती हैं ये चीज़ें, तो वहाँ हमारी जो डायनामिक्स है उसका नॉलेज वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है. ठीक है. और चूँकि ये हाई आरपीएम्स पे चल रही हैं, सो वी मस्ट हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ फटीग, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑलरेडी उसकी थ्योरीज़ के अंदर हमने सारा कवर अप किया हुआ है. ठीक है. तो फटीग की जो थ्योरीज़ हैं वो हम यहाँ पर अपने इस केस में अप्लाई करेंगे. स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स प्लस जो फटीग की थ्योरीज़ हैं, फेलियर थ्योरीज़ हैं,
वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैकेनिक्स का जो नॉलेज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट उस लिहाज से हो गया। सेकेंडली जो हमारा नॉलेज यहाँ पर इस्तेमाल होगा इस केस को डील करने के लिए वो होगा हमारी मटेरियल्स का नॉलेज, ठीक है। मटेरियल्स का नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमारे जो मटेरियल्स की इंटेग्रिटी है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको और से देखें तो आपको बेरिंग में नज़र आएगा कि ये जो इसके आउटर और इनर रिंग्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम द डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। लेकिन ये जो बॉल्स होती हैं बीच में जो लोड बेसिकली ट्रांसमिशन या लोड टेकिंग डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये मोस्टली हम लोग हाई टफनेस की वजह से हम इनको ब्रिटल बनाते होते हैं। ब्रिटल से मुराद ये है कि ये जो जब ये टफ तो ये बहुत होंगी लेकिन जब ये टूटेंगी तो ये किरची किरची हो जाएंगी सारी, ठीक है। तो इसलिए हमें जो मटेरियल्स का नॉलेज है टू डिज़ाइन अ बेरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो बॉल है क्या ये डायनामिक लोड को या ये स्टैटिक लोड को सस्टेन करेगी भी कि नहीं करेगी, ठीक है। एंड सेम केस अप्लाइज टू योर रिंग्स, इनर रिंग एंड द आउटर रिंग, ठीक है। एंड ओके, ये दो हमारे पास प्रायर हमें इनका नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक्स का, डायनामिक्स का और मटेरियल्स का जो आपने पढ़ा है। ऑब्वियसली इफ़ द डायनामिक्स इज बीन कंसर्न्ड विद द मटेरियल्स देन यू मस्ट हैव मास्टर कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो। अब आप आ जाएँ एक और नए फील्ड की तरफ जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का फील्ड। फ्लूइड मैकेनिक्स की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जिसको ट्रेपोलॉजी बोलते हैं। ट्रेपोलॉजी इज़ बेसिकली डीलिंग with the lubrication of different equipments and lubrication films जो माइक्रोन लेवल्स के ऊपर होते हैं। ओके, ट्रेपोलॉजी की ये डेफिनेशन होगी कि ये अपनी लुब्रिकेशन को डील कर रही है, ये लुब्रिकेशन फिल्म के साथ डील करती है। अब दिस फील्ड ट्रेपोलॉजी इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द बेरिंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरिंग्स के लिए वो काम कर रही है, वो आपकी जो है वो आपकी हर जगह पर जहाँ पर भी हमारे पास हम इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ जहाँ पर भी हम अपनी फ़िल्म की बात करेंगे, लुब्रिकेशन फ़िल्म की बात करेंगे, वो वहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल होगी। जिस तरह आपकी जो गाड़ियाँ हैं, बेसिकली जो गाड़ियाँ जब आपकी जिसमें ये पिस्टन चल रहे होते हैं, तो ये पिस्टन और आपका जो बीच में उसके जो कैम्स होती पिस्टन्स एंड जो आपकी जो हाउसिंग्स होती हैं उसके दरमियान, दोनों के दरमियान आपस में कांटेक्ट नहीं होता। अगर ऐसा हो तो आपके पिस्टन्स बहुत जल्दी वियर आउट कर जाएँ। उसके दरमियान एक लुब्रिकेशन फिल्म होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करें 8 से 10 घंटे के बाद, तो आप गाड़ी को 1 से 2 मिनट के लिए ड्राइव नहीं करते, ताकि वो प्रॉपरली वो जो फिल्म है वो प्रोड्यूस हो जाए वहाँ पे, और फिर आपकी गाड़ी की जो पिस्टन है वो वर्किंग शुरू कर दे अपनी। सेम इज़ द केस विद द बेरिंग्स। हम बेरिंग्स के अंदर लुब्रिकेशन लगाते हैं और जो हमारी बॉल्स होती हैं और हमारी इनर और आउटर हाउसिंग्स के दरमियान हम लुब्रिकेट करते हैं। एंड मोस्टली जो बेरिंग्स आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे अपनी लाइफ में वो बॉल बेरिंग्स होते हैं एंड दे आर ओपन बेरिंग्स, ठीक है। ओपन से मुराद ये है कि वो आपको फिजिकली नज़र आएंगे बाहर से, और उनकी जो ग्रीसिंग है या जो उनकी जो लुब्रिकेशन है वो हम बाहर से करेंगे। ऑयल को भी हम यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए और ग्रीस को भी। ग्रीस इज़ यूज इन मैनी केसेस और मोर केसेस। रीज़न, जब ग्रीस को आप कंप्रेस करते हैं और वो उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है तो ऑलरेडी जो ऑयल है वो प्रोड्यूस कर देती है और वो उसकी सारी की लुब्रिकेशन यहाँ पे कर देती है, ठीक है जी। तो ये हमारी लुब्रिकेशन का जो फील्ड है ये उसकी मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे दी है कि ये किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करें। ओके, ये तो एक चीज़ होगी। अब तीसरी जो चीज़ आ गई वो आ गई इसकी एप्लीकेशंस पे, कि एप्लीकेशंस की कहाँ है इसकी। बेरिंग हर उस जगह अप्लाई हो रहा है जहाँ हमारे पास रोटरी इक्विपमेंट चल रहा है, वो चाहे आपकी लेथ मशीन्स हों, चाहे वो आपके कटर्स हों, चाहे वो आपकी मोल्डिंग मशीन्स हों, चाहे वो आपकी गाड़ियाँ हों या आपके टॉयज़ हों। हर जगह पर जहाँ पर भी हम इस रोटरी इक्विपमेंट की बात करेंगे, कंप्रेसर्स, पंप्स, वाटर चिलर्स एट्सट्रा एट्सट्रा, जहाँ भी करेंगे वहाँ हम अपने बेरिंग्स को यूज़ करेंगे। अब ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। एक और चीज़ दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आपकी जो
इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैकेनिक्स में या मैकेनिकल इंजीनियर के लिहाज से या मेंटेनेंस इंडस्ट्री के लिहाज से क्या है। सो इसकी इम्पोर्टेंस प्राइमरी लेवल की इस वजह से बन जाती है क्योंकि आपकी जो भी रोटरी इक्विपमेंट चल रहा है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में या रिसर्च इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, उसमें फेलियर जो होता है, अगर फेलियर होती है, शॉर्ट फेल होती है या कोई और प्रॉब्लम आता है उसमें, तो सबसे जो पहली इंडिकेशन आपको मिलेगी फेलियर की, वो आपको बेरिंग्स देंगे। हमारे पास दैट इज़ द रीज़न कि इस इनकी हेल्थ को मालूम करने के लिए हम स्पेशल गैजेट्स को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनको हम वाइब्रेशन एनालाइजर या वाइब्रोमीटर्स कहते हैं। वाइब्रेशन एनालाइजर्स एक स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं जो वाइब्रेशंस को मेजर करते हैं, and with the knowledge of that vibration amplitudes and 50 plots and body plots and some extra knowledge over there, हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे बेरिंग्स हैं वो कब उनकी फेलियर कब होगा, इवन इफ़ दे आर रनिंग फाइन। ठीक है, तो इस सारे के सारे नॉलेज को हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर कैटर फॉर करते हैं, जिसके अंदर हम इन बेरिंग्स का वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं और उसके वाइब्रेशन एनालिसिस से हमें अपने प्रायर रिजल्ट्स में अपने अपने सेकेंडरी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे बेरिंग की लाइफ आखिर क्या होगी इन सर्टन कंडीशंस के अंदर। ठीक है जी, ओके, ये एप्लीकेशन होगी। फिर इसकी अगर आप हाउस होल्ड एप्लीकेशन देखना चाहेंगे तो आपकी मोटर्स लगी हुई हैं, पानी वाली मोटर हैं, उसमें ये अप्लाई हो रहा होता है। तो बेरिंग की हेल्थ की जहाँ तक बात है, तो फिर आपने ये देखा होगा जब आप मोटर नहीं लगाते हैं तो उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती, इट्स रनिंग वेरी स्मूथली। बट विद द टाइम क्या होता है कि वो इसमें थोड़ी सी आवाज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब बेरिंग जलती है तो आपको खुद की आवाज़ नहीं आ रही होती कि इतना शोर कर रही होती। अब उसके अंदर शोर जो होता है वो उसके नेचर का या उसके यूज़ का नहीं होता, वो शोर होता है सारे का सारा आपकी बेरिंग्स का, क्योंकि आपका जो बेरिंग उसमें लगाया जाता है वो 200-250 रुपये का होता है, इट्स वेरी चीप। तो उसकी सस्ते होने की वजह से जो उसकी जो क्वालिटी ऑफ बिल्ड क्वालिटी है वो उस तरह से नहीं होती जो कि होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंडली ये होता है कि घरों के अंदर आप जो बेरिंग लगाते हो तो आप उसको फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेट भी नहीं कर रहे होते, आपने बस लगा दी, मोटर का लगा दी एंड इट्स रनिंग रनिंग एंड रनिंग फॉर अनटिल अनलेस के वो आवाज़ करे और वो जैम हो जाए और आपको चेंज करना पड़े। ठीक है, अब वो लुब्रिकेशन भी नहीं कर रहे, प्लस सेकेंडली वो एक्सपोज्ड है आपके इन्वायरमेंट के साथ एंड इट इज़ वर्किंग विद वाटर, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, धूप है, बारिश है, आंधी है, डस्ट पड़ रही है उसके अंदर। सो ऑल दीज फैक्टर्स मेक अप द थिंग्स एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेरिंग। अगर उसी जगह पर आप एक और बेरिंग लगा दें जो कि सील्ड बेरिंग हो, इसका कोई इन्वायरमेंट से कोई तल्लक ना हो या इन्वायरमेंटल इफेक्ट कोई ना उसके ऊपर ना हो, तो वो बेरिंग आपका शायद फॉर द लाइफ टाइम चलता रहे। लेकिन द ऑन द अदर साइड ऑफ द थिंग इज़ दैट कि जो आपका सील्ड बेरिंग होगा, एक बेरिंग जो कि आपका 200-250 रुपये का नॉर्मल बेरिंग आ जाएगा आपके पास, वो उस बेरिंग से शायद 8 से 10 गुना कॉस्ट में ज़्यादा हो या उसकी उसकी या अवेलेबिलिटी उस तरह से ना हो। फिर इस लिहाज से भी व्हेन यू सी द थिंग्स कि जी इतने की मोटर नहीं जितने का बेरिंग लगा दिया उस केस में, तो दैट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कि जी हमारी जो बेरिंग है वो कौन सा बेरिंग किस जगह पे लगना चाहिए आपको। ठीक है, सो विद ऑल दिस सिंपल एंड विद प्रायर नॉलेज, जिसमें अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेरिंग कर क्या रहा है, बेरिंग कैसे चलता है, बेरिंग की टाइप्स क्या हैं, उसमें हमारी फील्ड्स कौन सी इन्वॉल्व होंगी, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है, उसको किस तरह से कैटर फॉर, उसकी हेल्थ कैसे मेंटेन की जाती है, एंड ऑल दैट स्टफ विच आई हैव टॉट यू पीपल राइट नाउ। ये आपका एक प्रायर नॉलेज हो गया बेरिंग्स के केस में। ठीक है, सो अभी एज आई डोंट हैव अ फैसिलिटी फॉर द वाइट बोर्ड, लेकिन मैं फिर उसको कैटर फॉर करने के लिए मैंने कुछ अच्छी सी वीडियोज़ हैं जो कि आपको डीप डाउन बताएंगी कि बेरिंग्स किस तरह वर्किंग करते हैं और किस तरह चलते हैं। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द सिंपल वीडियोज़, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो ये बेरिंग्स हैं वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है जी। नाउ यू कैन सी कि ये बॉल्स हैं और ये सेपरेटर के अंदर फिट हो जाती हैं। फिर इसमें एक इनर रिंग आता है और एक इसके अंदर वो एक पाथ पे चलती हैं, ग्रूव बने होते हैं। आउटर रिंग आता है और इस रिंग के बाद ऊपर से फिर सील आती है और उसके बाद रिटेनर्स, इसके बाद लॉक सील्स होती हैं।
वो इसमें लगती हैं और फिर एक बेरिंग यहाँ पे बन जाती है। ठीक है जी। सो लेट्स सी, ये अभी बताएगा आपको जो ऑथर है कि ये किस तरह से बेरिंग काम कर रहे होते हैं। सो यू कैन हैव अ गुड लुक ऑन दैट। Parts of a ball bearing. In this session, we will try to understand the disassembled view of ball bearing and roller bearing. Let's analyze the figure. A bearing's smooth performance is assured by a combination of 4 basic working parts. ओके, सो विद दिस सिंपल वीडियो ये आपको नॉलेज हो गया होगा कि किस चीज़ों से किस किस पार्ट्स के थ्रू जो बेरिंग है उसको बनाया जाता है, बनता है, वो बनना है, उसकी असेंबली किस तरह से होती है, उसमें बॉल्स हैं, रिटेनर्स हैं, इनर रिंग है, आउटर रिंग है, सील्स हैं। सो दिस इज़ वाज द बेसिक एनिमेशन टू शो यू पीपल कि बेरिंग आखिर है क्या। ठीक है। अब चूँकि हमारा जो जो कंसर्न है या जो हमारा जो बेसिकली टॉपिक्स हैं जिस पर हमने पढ़ना है वो हमारे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स हैं। ठीक है। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रोलर और एक होते हैं बॉल बेरिंग्स। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके आपस में क्या डिफरेंस है, या ये किस तरह से आपस में कंसर्न हैं, या किस किस जगह लगाए जाते हैं, उसके लिए आई हैव अ सिंपल स्मॉल वीडियो फॉर यू पीपल, जिसके अंदर एनिमेशंस के थ्रू मैं आपको शो हो जाएगा कि किस तरह से हम वर्किंग कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर द वीडियो। Hi, John here. In this video we're going to be looking at anti-friction bearings. By the end of the video you're going to know what an anti-friction bearing is, as well as a rolling element bearing, a rolling bearing and a rolling contact bearing. You're also going to know what the two main categories of bearing are, what the main components of anti-friction bearings are, and how anti-friction bearings work. So let's start with the basics. There are two main categories of bearings, anti-friction bearings and plain bearings. Now we'll cover plain bearings in a different video. Let's focus on anti-friction bearings. Anti-friction bearings are also known as rolling contact bearings, rolling element bearings and rolling bearings. All of these names refer to the same thing. These are just other names for an anti-friction. Okay, we will hold on for 1 or 2 minutes. After that I will continue the video.
Okay, so we are continuing with the video. Please go ahead. Hi, John here. In this video we're going to be looking at anti-friction bearings. By the end of the video you're going to know what an anti-friction bearing is, as well as a rolling element bearing, a rolling bearing and a rolling contact bearing. You're also going to know what the two main categories of bearing are, what the main components of anti-friction bearings are, and how anti-friction bearings work. So let's start with the basics. There are two main categories of bearings: anti-friction bearings and plain bearings. Now we'll cover plain bearings in a different video. Let's focus on anti-friction bearings. Anti-friction bearings are also known as rolling contact bearings, rolling element bearings, and rolling bearings. All of these names refer to the same thing. These are just other names for an anti-friction bearing. In order to keep things clear, we're going to call them anti-friction bearings only. There are two main categories of anti-friction bearing: ball and roller. As the name implies, ball bearings use balls as rolling elements. Roller bearings use rollers as rolling elements. In order to understand the difference between the two main types of anti-friction bearing, we need to have a look at the construction of an anti-friction bearing. An anti-friction bearing consists of rolling elements, a separator, an inner ring, an outer ring, and sometimes a shield or a seal. You're now looking at a cross-section of a ball bearing. Let's take the bearing apart and look at each of its parts individually. This particular bearing uses balls as the rolling elements. A separator is used to evenly space the rolling elements apart. The separator is also known as the retainer or cage. Now that the rolling elements are evenly spaced apart, we can view the final two pieces, the inner ring and the outer ring. One of the reasons that learning about bearings is so confusing is because many of the components all have several names. An inner ring is also known as an inner race. On tapered bearings, it will also be known as a cone. The outer ring is also known as the outer race. On tapered bearings, it's also called the cup. The separator is also known as the retainer or cage. To recap, the balls form the rolling element of a ball bearing. For roller anti-friction bearings, the rolling elements may be cylindrical, barrel, tapered, or needle-shaped. The separator is used to evenly space the rolling elements apart. The separator is also known as a cage or retainer. The rolling elements are sandwiched between an inner ring and an outer ring, also known as an inner race and outer race, or for tapered bearings, a cone and a cup. Some bearings may be installed with a metal shield, which protects the bearing to some degree from foreign particle ingress, which may contaminate the lubricant inside the bearing. If the internals of the bearing must be completely sealed from the outside, then a seal will be used instead of a shield. Seals are usually manufactured from rubber or Teflon. Seals completely seal the internal parts of the bearing, which prevents foreign particle ingress and moisture ingress. Seal bearings are sealed for life. The lubricant housed within the sealed area is used to lubricate the bearing until the bearing no longer functions or is replaced. Typical lubricants for anti-friction bearings are grease and oil. Grease contains oil, although a thickening agent is added to make the lubricant adhere to the bearing's internal surfaces. Thickening agents are usually soap or non-soap based. When an anti-friction bearing has no shield and no seal, it is classed as an open bearing. Most anti-friction bearings utilize one stationary ring and one rotating ring. The rotating ring is usually the inner ring, which is connected to a shaft. The stationary ring is usually the outer ring. As the shaft rotates, the inner ring also rotates, as do the rolling elements.
Notice that the movement of the shaft is not transferred to the stationary ring. So you've now learnt what the main two types of bearing are, anti-friction and plain bearings. You also know what the main two categories of anti-friction bearings are, ball and roller. We've discussed all of the main components of anti-friction bearings and how anti-friction bearings work. Please do be aware though that there are different variations of every kind of anti-friction bearing. Some anti-friction bearings do not use an inner ring. Some anti-friction bearings do not use a separator. If you'd like to learn why that is, then check out our anti-friction bearings course. In the course, we'll discuss ball anti-friction bearings, as well as cylindrical roller bearings, tapered roller bearings, needle roller bearings, and barrel roller bearings. The anti-friction bearings course is just one of many engineering courses, and if you're a student, you can access all of these engineering courses for only $19.99 a year. If you like this video, then please do like it or share it. It really does help us out and allows us to produce more and more content. And if you've got any questions or comments, then just leave them in the video description area. Okay, you must have an idea कि आपके जो ball और जो roller bearings हैं, how they are working and what are the main components जिसके ऊपर ये सारे के सारा base करता है, ठीक है? So these were the very simplest bearings जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर. So our prime focus is basically the ball bearings. So ball bearings की जो details क्या हैं उसके लिए we will go for this small video over here that will tell you in detail कि हमारी जो ball bearings हैं वो क्या है, ठीक है? Before we go into the ball bearings, ये जो आपको 3 bearings यहाँ पड़े हुए हैं, they all are the ball bearings that are open to, ठीक है? Open to us कि ये इनकी हम greasing हम इनकी बाहर से करते हैं और इनकी greasing regularly देखी जाती है, ठीक है? So let's go for the lecture, the video. Okay. So this is the final lesson in this part of the course covering ball bearings. Let's do a recap on some of the things that we have learnt. The first thing I'm going to do is take a cross section and we can see some of the parts. So we've got our steel balls. Let me just back it up a moment. Got our steel balls. These are the rolling elements. We've got our separator / retainer / cage. We've got the inner ring and we've got the outer ring. Inner ring also known as inner race and outer ring also known as outer race. We've then got a seal and we can also change this to have a shield instead. You can see here that the shield is metal, whereas on the seal it's most likely going to be rubber or Teflon. We can have a look at the raceways. What I'll do is I'll remove the balls and I will remove the separator, and now we can see the raceways. There are 2 parts to this raceway. We have the outer ring raceway and the inner ring raceway. Now, depending on the depth of the outer ring raceway and the inner ring raceway, we'll classify the bearing as being either deep groove or shallow groove. Deep groove bearings are also known as Conrad bearings. Some people will tell you that they're called that because they're concentric and radial loaded. It's not that at all. They're actually named after Robert Conrad. If we change to a shield design now, we can see we have this ring-like shape which we can install, and then we'll push the second part in until it snaps into position. If we switch over to a seal design, you can see that we have a sealing surface. It's actually going to seal along this whole section here and there and there. It's not very well shown on the model, but that would be the sealing surface. And the same here, and it will press against the inner ring. That is a type of seal that presses on both rings and creates more friction
and thus is used for lower operating speeds. Remember, the idea with the seal is that we keep the lubricant inside the bearing and any foreign particles, moisture, water outside. Shields don't do that. They will trap the lubricant inside to a certain degree, although they don't form perfect seals. Let's have a look at the bearing now as it operates. I'm going to remove the seal, and we'll push play, and we can see that the inner ring is rotating along with the separator and the rolling elements. The outer ring is stationary, and normally there'll always be one ring that rotates and one ring that is stationary. In fact, there'll always be a ring that is stationary and always one that rotates. But it may be that sometimes you have it the other way around, that the outer ring rotates and the inner ring is stationary. I haven't seen that, but apparently this design of bearing does exist. However, normally it is the inner ring that rotates and the outer ring that is stationary. The main types of lubricants used with ball bearings are oil and grease. I'll remove the outer ring and I'll show you what happens to the grease. We can see that the balls are going to roll along the inner ring raceway, and as they do, if the bearing is packed with grease, the balls are going to crush the grease against the raceway. I can't really get a good angle here, unfortunately, without removing the balls in the separator, but the balls are going to crush the grease against the raceway, and as they do, they're going to squeeze the oil out of the grease. Now, the grease consists of mostly oil with a thickening agent, which is quite often soap. So as we crush the grease against the raceway, the oil is going to be liberated from the grease and we're going to get lubrication. Good thing about grease is that it tends to stick to where we put it, and that means it's going to stay within the confines of the bearing. Downside with grease is when you heat it up, the oil will be liberated from the thickening agent at a certain temperature and it will run out of the bearing. At this point, you no longer have any lubrication. Friction will increase, the temperature will increase, wear will increase, and the bearing will seize or just fail. Another limiting factor with grease is that when you rotate the bearing at a very high speed, I might even be able to do that now by adjusting the speed, the forces that are applied to the grease have a tendency to throw the grease outwards. People call this centrifugal force, other people call it centripetal force, depends on how you want to describe it. But in engineering we say centrifugal, and centrifugal force is going to throw the grease out to the side, and we're going to end up with less lubrication on the inner parts of the bearing on the inner ring side than we will have on the outer ring side. So both the speed and the temperature make a difference to the properties of the lubricant, so keep that in mind. When you have a bearing that has an appearance such as this, the bearing is pre-lubricated. The lubricant is already housed within the sealed area of the bearing, and you'll be able to put that bearing straight into service. If you're heating the bearing up, just be careful that you don't heat it up so much that the oil becomes liberated from the grease and begins to drip out of the bearing. You can sometimes see this even if the bearing is sealed. Not only that, but the seal itself will only be rated up to a certain temperature, and especially if it's a rubber seal, it will not handle high temperatures. And the final point I want to make here is that this type of bearing may be single row or double row. You will not see a ball bearing with more than 2 rows. So the ball bearing is different from a roller bearing where you may see more than 2 rows. So I hope now you understand exactly all of the components of a ball bearing and how they work together and how the bearing works in general. Let's move on to the next section of the course now, and we're going to talk about the second category of anti-friction bearings, and this category is roller bearings. If you like this video and would like to see more engineering related tutorials, then check out some of the links in the video description area, and if you click on these links, you'll get a special discount price for all of our engineering video courses.
If you want to support the channel, then please do like this video or share it on social media. It really does help us out. You can also leave a comment in the comments section, and if you've got any questions, then please just ask, and I will try to respond to you within 48 hours. Thanks very much for your time. Okay, so with these introductions to the ball bearings, you must have a concept के आपके जो bearings होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है. तो let's move on with the lecture, in which we see कि बॉल बेरिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से हैं और वो किस तरह से किसी भी प्रैक्टिकल केस में अप्लाई होता है. सो इन दिस स्मॉल एनिमेशन वी विल सी कि ये जो हमारी गाड़ी है उसके अंदर जो बेरिंग है वो किस तरह से या कहाँ लगा हो, ठीक है. The center part of a wheel on a car is called a hub. The wheel spins smoothly because the hub has bearings inside it. Bearings reduce friction, which is a force that resists motion. A common type of bearing has tiny steel balls that allow the hub to roll around the axle instead of rubbing against it. Rolling produces less friction than rubbing, so having bearings in the hub will make it easier to start spinning and keep it spinning. ठीक है. सो ये चीज़ होगी जिसके अंदर आपने ये देखा कि ये अप्लाई किधर हो रही है या ये किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब हमारे पास जब हम शाफ्ट के अंदर हम अपने बेरिंग को फिट करते हैं तो उसके साथ उसकी अलाइनमेंट और उसके सेंटर पॉइंट की अलाइनमेंट और उसकी जो सेटिंग है उसकी असम्बली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने बेरिंग्स लगा दिए आप शाफ्ट के साथ और वो सही अलाइन नहीं थे, उसमें डिसकनेक्शन था, उसमें कोई प्रॉब्लम था, तो उससे क्या होगा कि जब वो रोटेट करेंगे तो चूँकि फोर्सेस, चूँकि बेरिंग आपने लगाया वो रेडियल फोर्सेस के लिए था, आप उसके साथ एक्स्ट्रा फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट बेरिंग विल नॉट वर्क एट ऑल, ठीक है. सो उसकी जो अलाइनमेंट है या उसकी जो सीक्वेंसिंग है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. शाफ्ट अलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं. अब जो आपके पास बेरिंग्स लगाए जाते हैं. All rolling element bearings have internal clearances. Bearing clearance is the play that exists between the rolling elements and the inner and outer races of the bearing. Bearings must have internal clearances when the machine is not operating, because the races will expand with the rise in temperature that occurs when the machine is operating. Rolling element bearing clearances, or fits, are classified from C0 to C5. C0 fits exhibit very small internal clearances, and C5 fits are much looser. Most machines in industrial manufacturing utilize C3 fits. Factors that determine bearing clearances include the fit, the type of bearing, and the diameter of the shaft. With a C3 fit and a 1-inch diameter shaft, the clearance is between a half a thou and 1 thou. With a C3 fit and a 4-inch diameter shaft, the clearance is much larger, between a thou and 2.5 thou. Because of bearing clearances, the shaft can be displaced both radially and axially. Radial clearance is the play that exists perpendicular to the shaft. Some bearings also have axial clearance, which is play that exists parallel to the shaft.
Okay, so with this thing, you must have a knowledge of aligning the shafts, कि हम अपने पास जो shafts के साथ होती हैं, जो bearings align करते हैं, और उनकी आपस में क्या clearances क्या होती हैं, और वो clearance क्यों रखी जाती है. तो there has been quietly in good explained over here with the some standards also, कि वो क्या कर रहा है या क्या उस तरह से नहीं कर रहा. ठीक है. So ये आपने जेनेरिकली यू हैव सीन दिस थिंग कि आपके पास जो है वो बेरिंग्स क्या थे, बॉल बेरिंग्स क्या थे, एंड डिफरेंट थिंग्स. सो उन दो को छोड़ के देयर आर लॉट ऑफ अदर बेरिंग्स आल्सो. ठीक है. जिसके अंदर हमारे पास कुछ बेरिंग्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ अलाइनिंग होते हैं, कुछ बेरिंग ऐसे होते हैं जो कि थ्रस्ट होते हैं, कुछ बेरिंग ऐसे होते हैं जो कि थ्रस्ट को भी केटर फॉर कर लेते हैं और अपनी जो रेडियल फोर्सेस हैं उसको भी केटर फॉर कर लेते हैं. कुछ ऐसे बेरिंग्स होते हैं जो हमारे एंगल्स पे लगाए जाते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट्स के लिए. आपके अगर शाफ्ट सीधी नहीं है और एंगल्स पे लगी हुई है तो बेरिंग एंगल पे लगे होते हैं. फॉर दैट दे नीड आल्सो स्पेशल केस ऑफ हाउसिंग जिसके अंदर हम उनको रखते होते हैं. ठीक है जी. फिर हमारे पास स्फेरिकल रोलर्स होते हैं और फिर हमारे पास एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बेरिंग. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग्स, लॉट ऑफ बेरिंग्स in the world which we can study if you have to do a research in that. ठीक है. उसमें आपके पास जो बॉल्स हैं वो दो भी किस्म की हो सकती हैं. उसके अंदर दो सेपरेट उसकी चेन चल सकती हैं और वो दो सेपरेट चेन जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बेरिंग है जो दिस वन ओवर हेयर. इसके अंदर आपको दो रिंग्स नज़र आ रहे हैं बॉल्स की. ठीक है. और इस केस के अंदर आपको सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग के अंदर बॉल्स नज़र आ रही हैं दैट आर एट नॉट पैरेलल टू वन अनदर बट दे हैव अ फेज डिफरेंस ओवर हियर. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग्स विद अस. सो विद दैट अब आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि हमारे जो बेरिंग्स हैं या जो हमारे रोलर बेरिंग्स हैं, ये बॉल बेरिंग्स हैं, तो किस तरह चल रही हैं और क्या कर रही हैं. अब अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं, अगर आप इसको स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाना शुरू करें फोर्सेस के लिहाज से, तो ये आपको आइडिया होगा कि फोर्स के लिहाज से हाउ इट विल वर्क. अब इसके अंदर आपके पास जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो पॉइंट, क्योंकि ये आपको रोलर नज़र आ रहा है तो रोलर के केस में जो पॉइंट जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट नहीं होता, वो लाइन कांटेक्ट में आता है. ठीक है. तो इससे मुराद ये है कि ये ज़्यादा लोड लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो रोलर बेरिंग्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर बॉल बेरिंग्स. ठीक है. तो अगर आप इसकी डायग्राम फोर्स डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी जिस तरह से अभी ये आपको नज़र आ रहा है कि फोर्सेस जो हैं वो आपकी इनवर्ट जा रही हैं. देयर इज़ अ शाफ्ट ओवर हियर, देयर इज़ अ सेपरेटर है, उसमें रोलर्स लगे हुए हैं और वो एक वर्किंग कंडीशन में स्टडी स्टेट आपने इसका एनालिसिस किया है. स्टडी स्टेट आपने इसकी एक पॉइंट देखा है, उसके ऊपर आपने ये फोर्सेस यहाँ पे शो कर दी हैं. ठीक है. सो अगर आप इसको देखें और अगर आप इसको एनालाइज करें फ्रॉम द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू और आप कहें कि मैं इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी या इस पर फेलियर थ्योरी लगाना चाहता हूँ और अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ विद यूजिंग सम FEM सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो इसकी आपको डायनामिक सिमुलेशन मिलेगी स्टैटिक इसकी फटीग एनालिसिस की, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह के प्लॉट्स, इस तरह की एनिमेशंस आएंगी. अब इस सारे केस में सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपकी जो मेन कांटेक्ट में आ रही हैं वो 4 रोलर हैं जो कि मेजरली आपकी फोर्स टेकिंग है और जहां आपको स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड्स नज़र आ रहे हैं. दूसरा, अगर आप स्ट्रेस के प्लॉट्स को देखना चाहें जिसको आप लेजेंड्स कहते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आप ये देखें कि जो आपके एरिया ऑफ कांटेक्ट है रोलर के साथ, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मैग्नीट्यूड जो रेड पॉइंट्स नज़र आ रही हैं दे आर द मैक्सिमम स्ट्रेस मैग्नीट्यूड्स. रेस्ट ऑफ द रोलर के ऊपर आपको इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं मिलता एंड दैट मैग्नीट्यूड इज़ डायरेक्टली पासिंग थ्रू योर सेंट्रल लाइन. अगर आप इसका CG निकालना चाहें तो वो CG से पास आउट कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आपके इन कॉन्टैक्ट इस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर देयर आर 4 रोलर्स दैट आर स्पेसिफिकली इन कॉन्टैक्ट फॉर द फोर्सेस. तो वही स्ट्रेसेस आपकी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ ऑल आर नॉट अंडर द हाई स्ट्रेस मैग्नीट्यूड्स. ठीक है. तो ये जो एक छोटा सा एनालिसिस हो गया जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो हमारे कौन से हैं और हमारे स्ट्रेस पॉइंट्स से ही हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑल द
द बेरिंग वुड बी व्हाट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप इसको सिमुलेट भी कर लेती हैं, लेकिन होता ही है कि ये जो डायनामिक सिमुलेशन बनी हुई है ये स्टडी स्टेट केस के लिए वन जो आपकी फोर्स मैग्नीट्यूड्स हैं ये उसके लिए यहाँ पे बनाया, ठीक है जी। Okay, so I will end up the lecture over here for today, and from the next lecture would be based on the detail of these bearings. हम इनको further हम इनको पढ़ेंगे और we will solve some problems also for the introduction of the bearing. I hope कि आप लोगों को इस वक्त काफ़ी इसका आइडिया हो चुका होगा bearings का. So take good care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.